Okay, welcome to this new diamond call. We are on the next level of the mission, and next level of the mission is creating your personal coaching brand. How do you create a personal coaching brand, and what can personal coaching brand do for you? It is really important. Just want to tell you before going ahead, there is a story of a person called Jasmine Alec. If I tell you about the Jasmine Alec is somebody who is having not having any courses. Jasmine Alec का कोई course नहीं है. He is just using his personal branding. And just because of his personal branding, Jasmine Alik is able to create $250,000 annually. He charges $500 per hour. Daily, he books 2 calls every day, minimum. And like $500 is for normal people, and but for corporates or other clients, he charges $4,000 per hour. And I'll show you his post. So that is why I want to tell you why personal branding can help you. And one more thing, the big problem that you are facing right now is people are not paying you. Why people are not paying you? Because of only one thing, that's called personal branding. You don't have a personal brand. I'll give you very realistic image. Okay, every one of you know me, right? Just raise your hand. Each one of you know me. You know Dr. Sandeep also? Okay, if both of us stand, you will meet whom? Type in the chat box. You will meet whom first? If Dr. Sandeep stands, if I stand together with him, you will meet whom first? Sandeep sir. Why? Sandeep sir, the answer is clear. Why? Why Dr. Sandeep? मैं मार्केट के लिए ज्यादा वैल्यू का व्यक्ति हूं. मेरी वैल्यू मार्केट में ज्यादा बड़ी है. माई यूजेबिलिटी इज मोर. आई हैव अ बिगर ब्रांड. आई हैव अ बिगर पर्सोना. आई हैव अ बिगर थिंग. What do you say? Isn't it right? If I'm saying this, that is the power. Did you understand what is personal branding? In a very simple sense, a realistic example. Second thing, personal branding is all about what people say about you when you are not there. जब आप वहां पे नहीं होते हैं तो बैकग्राउंड में लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो पर्सनल ब्रांडिंग. मेरे पापा बहुत अच्छे हैं. ही इज लाइक गॉड. छोटे छोटे बच्चे पर्सनल ब्रांडिंग कर देते हैं आपकी. मेरी मम्मी तो बहुत ऐसा कैरेक्टर है कि डरा के रखती हैं. दैट्स पर्सनल ब्रांडिंग. बच्चे कहते हैं यू आर इन द ऑफिस, यू आर अ बॉस. ओके, खड़ूस बॉस है. पर्सनल ब्रांडिंग. जॉवियल है. इनका केबिन हमेशा खुला रहता है. ही इज जस्ट ओपन फॉर एवरीवन. ही इज ओके फॉर एवरीवन. पर्सनल ब्रांडिंग. डिड यू गेट एवरीवन? And today I will not tell you only theory. As usual, कुछ तो चिपकाना ही आज आपको. Like ये वर्ड अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं. तो आज just type in the chat box. आज आपको क्या चिपकाया जाए? Tell me. What should I paste on you? आज क्या चिपकाया जाए आपको? Type in the chat box, everyone. What should be pasted to you? Yes. Branding. Okay. चलिए आज आपको ब्रांडिंग चिपकाते हैं. ओके, चलिए. सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन कॉल्ड जे एलिक. ओके, लुक एट दिस पर्सन. आई विल रीड द पोस्ट. ओके, आई एम ऑलरेडी इन स्पॉटलाइट. लुक एट दिस पोस्ट. एवरीवन टोल्ड I was too late to do this. You should not launch a community. You priced it 2x or 3x. Not worth your time. Guess what? All of these three are correct. In reality, converted 25% of my wait list. Already filling our February wait list. 0.5 million annual revenue added in 7 days. 7 days. Look at this. 7 days. It's a very big personal brand. On the top of my already booked out LinkedIn business. When you build trust for a long term, there is no such thing as too late. Monday motivation. This is your sign to pursue your dream regardless of whether everyone else is on LinkedIn fields tell you or whatever it is. I actually had, what is this? Somebody is connecting me. Okay, leave it. So pick your circle closely. He is J. Alec, Jasmine Alec. 1926 comments, 18 repost. That is the power of his brand. Okay, this is Jasmine Alec. Now, what more I should tell you about personal branding? I told you the story of Dr. Sandeep. Dr. Sandeep खड़े हो, मैं खड़ा हूं. किसके पास जाओगे? Dr. Sandeep के पास. He has a bigger brand. I also have a brand, but मेरी brand छोटी पड़ जाएगी सामने. Number 2, look at the Jasmine Alec. $500 an hour.
नो कोर्स, कुछ कोर्स नहीं बेचते हैं, कुछ बेचने की प्रक्रिया नहीं है, कोई चिपकाने का तरीका नहीं है। ओके, इट डजंट डू एनी काइंड ऑफ पेस्टिंग टू पीपल, इट इज ओनली वन थिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। कंपनियां लाइन लग के काम करती हैं। नाउ लुक एट व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। हितेश, बट प्लीज छोड़ दो वर्ड, नहीं, आई विल नॉट लीव दिस वर्ड हितेश, आई विल कीप दिस वर्ड बिकॉज इट्स बीइंग कनेक्टेड नाउ टू मी एज लॉन्ग एज आई एम हियर। छोड़ना नहीं है इसको, ये मोटिवेट करता है। Okay. So now just want to tell second part of the story. Second part of the story is, now look at this. Cisco. Cisco is investing too much. Cisco को ये पता लगा कि इतना मार्केटिंग करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद हमारी इतनी रेवेन्यू होगी. But then Cisco decided that if we do teach personal branding to 68,000 employees, okay, if we teach personal branding to 68,000 employees of ours, we can make 3x of what we were making through marketing. क्या समझ में आया? अगर हम मार्केटिंग करते हैं एज अ सिस्को, we will be making X amount of money from marketing. But what if we teach 68,000 people, they can create their personal brand and we'll be making 3x of what we were making. Let me show you practically. Cisco is trading, okay, I was saying 68,000, but it has 84,000 employees. Cisco is training 84,000 of its employees to build their personal brand. Good news for me. Large business are catching on personal branding because people trust each other, not companies. Back in 2000, leaders saw company-wide personal branding. If I help my employees build personal brand, the competition will steal them. Only C executives were building their brands. Okay, in C-suite, that's called C-suite. In 2003, that ideology became outdated. Now an employee career was under her control. She could reach out to any company in the world. So personal branding has become the popular among corporates for two reasons. It helps employees create digital assets, boost the company's brand awareness. Plus, there are extra benefit to enterprises. Personal stories humanize brand. Having thousands of small brands out there is better than having one company brand because employees created posts are more heartfelt. तो अगर आप किसी कंपनी के आजकल एम्प्लॉय पोस्ट कर रहा है ना कि मैं सिस्को में काम करता हूँ, माय कंपनी इज गुड, ये हमारे यहाँ इतना जाते ही एंट्री करते ही हमारे को ये बैग मिल गया है, दिस इज माय, लाइक इफ यू सी गूगल एम्प्लॉइज, normally they do that, okay, I am on work and I am sleeping, I am resting, I am enjoying, I am having the party. Okay, they show the Google workplace. What is that? They show the Google workplace to tell you that boss join करना है, आ जाओ, अगर ये जिंदगी जीनी है आ जाओ, डॉक्टर संदीप, here is the mountain and here is the fountain, here is the mountain, here is the fountain. 1 करोड़ रुपए कमाना है ये जिंदगी जीने के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग. ओके, सो if you could recollect, these are all the points of personal branding. I'll take it something more about personal branding. By the way, who's really getting excited about personal branding? अरे जितना सोचा तो उससे तो बहुत ज्यादा है ये. टाइप इन द चैट बॉक्स BJH, बहुत ज्यादा है. कुछ बेचने की, इफ आई टेल यू, अगर आपने ये सीख लिया ना, आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं बेचोगे ना, जबरदस्ती लोग खरीदेंगे आपसे. हाउ मेनी वांट दैट? डू यू ट्रस्ट मी ऑन दैट? हाउ? Why do you trust me on that? Why do you trust me on that topic? This point. Okay. Okay. Showed an example. Word. Okay. Oh, we trust your knowledge power. Okay. We trust you. Thank you. Thanks for the trust. Now, the second part of the story. Okay. I'll not show you, but I sometimes I'm getting emails that's I have read your email and it's really connecting with me. How should I proceed? Should I go ahead with the quarterly thing or should I go ahead with the annual thing? These are some emails to me and that really helps me. तो वहां पे क्या करना पड़ता है ना, वहां मुझे कुछ बेचना नहीं पड़ जाता है क्योंकि बिक जाता है.
और कैसे बिक जाता है? आई डू लॉट ऑफ सोशल मीडिया एफर्ट्स। देखो एक चीज आप लोग सभी समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, what your mentor is doing ads. How many of you can actually run ads? Type in the chat box I if you can really run ads. रन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने गूगल एड चला दिया और फेसबुक एड चला दिया और हो गया। व्हाट आई मीन रनिंग द एड्स इज मेकिंग देम प्रॉफिटेबल, that you ran the ad for at least 2000 or 1000 rupees a day. Arun Kumar, perfect. Okay, then do run the ads. If you feel you are profitable with the ads, do run the ads. But if you believe you are not profitable with the ads, don't run the ads, don't burn your money. Because the data I'm giving you, to get a 99 rupees lead, your mentor has to pay 1500 rupees. Understand this logic. I've already told you many times. To get 199 rupees lead, he is paying 1500 rupees. और 1500 रुपए की एक लीड क्लास में नहीं बैठती है। आउट ऑफ 3 पीपल, लाइक 30% इज अज्यूमिंग देयर इज अ 30% कन्वर्जन रेट, आउट ऑफ 3 पीपल 1 विल कम। सो 45, वो लीड कितने की हो गई अब क्लास में बैठने वाला व्यक्ति? 4500। गॉट इट? 4500। 4500 के 30 लोग क्लास में बैठे हैं। 10% एज्यूमिंग कन्वर्जन रेट है। ओके, एज्यूमिंग देयर इज अ कन्वर्जन रेट ऑफ 10%। सो जो 10 लोग हैं, जो 10 लोग हैं उनमें से एक कन्वर्ट होगा। सो आउट ऑफ 45,000 रुपीज, सॉरी 4500 रुपीज के 10 लोग कितने हो गए? 45,000 रुपीज। उसमें से कितने कन्वर्ट होंगे? एक। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्सन? कैन यू जस्ट टेल मी? व्हाट इज, टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग? और आपका सफायर मेंबरशिप क्या है, वैल्यू है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर सफायर मेंबरशिप? कैन यू अफोर्ड दैट? कैन यू अफोर्ड दैट? Okay, then Dr. Ganga can afford that. Okay, Dr. Tejaswani can afford that. Perfectly fine. That's okay. So just want to tell you, या तो एड्स पे पैसा खर्च कर लो। देखो 2020 में आप लोग आ जाते ना, आज सब लोग बहुत आगे बन निकल जाते हैं। योर मेंटर टेल्स मी मोस्ट ऑफ द टाइम only this point, because both of us started together, but I went on because I had something called to complete my PhD program, so I got late by 8 or 9 months or 10 months. And in that 10 months, when people, my एक मेरा फ्रेंड भी जोक करता है मुझसे, he just jokes also. There is another friend that जब सारी दुनिया पैसे कमा रही थी कोविड में, आप क्या कर रहे थे? So COVID was the best time. COVID was the best opportunity. If you missed it, no problem. Every day there is an opportunity, but उतना आसानी से पैसा नहीं बनेगा जितना कोविड में बन रहा था। कोविड में लोग धड़ 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 खरीद रहे थे, उनको कुछ मतलब नहीं था, रख लेते हैं, खाली है, देख लेंगे। 50,000 का कोर्स ले लिया, 30,000 का ले लिया, सैलरी अकाउंट में आ रही है, जाना कहीं है नहीं, खर्च क्या करें? So they were buying courses, but right now people are not buying your courses and programs. People want a time from you. People actually pay you money just to get you, not any of your course, because they have so many courses. Now, another part of the story. Coming back to this Cisco and coming back to the other things. Okay. Now look at this Cisco. There is a reduced time to hire when you are doing a personal branding for a company. I'm talking about why Cisco is investing heavily on personal branding. Cisco LinkedIn influencers help reduce time to fill positions by 4 days. 4 दिन से कम हो जाता है. Better talent. Outsider following your company or socials will be motivated to apply at your company. आओ आओ Google में आओ, क्या बढ़िया जिंदगी है. Whatever you need wine, you need dine. So wining, dining, resting, playing, golf, everything is there except time. So there will be a huge difference between a new cold hire from a job brand versus, so okay, so higher talent retention, better organic reach. Lastly, personal brands have higher organic reach. So now this is a post why Cisco is training its 84,000 employees to be LinkedIn influencers. So what is actually, she is the CHRO, Paolo Confino. She's the CHRO of Cisco. अच्छा, CHRO खुद है जो HR head है. Okay. She is now talking about, एक साल पुरानी बात है, now it is 3 years approximately. Okay. 2 years, not 3 years, 2 years. Cisco decreased the number of days it takes to fill an open position by about 4 days. So this is the post by, the Fortune and the activity by the CHRO of Cisco. Another thing of Cisco.
Cisco wants 65 1 year ago. Cisco wants 65,000 employees to learn personal branding. Building a personal brand as an employee gives you access to huge network. Now this is the post. Let's read. With the way the job market is going, I think it's important for employees to see a way to build personal brand. While hiring decisions have been based on competence alone. So how many of you want to build your personal brand now? कुछ भी करेंगे लेकिन पर्सनल ब्रांड बनाएंगे. टाइप इन द चैट बॉक्स आए. कुछ भी करेंगे पर्सनल ब्रांड बनाएंगे. Personal brand allow you to pay. Okay, now what is the step to create a personal brand? There are few steps in your coaching and training journey to create a personal brand. So what are those steps? Let me share with you. So the first step you will find is UVP. So what is your UVP? UVP means unique value proposition. So what is unique value proposition? Your unique value proposition is something that is unique to you. If you are a health coach, how are you different from any other person, any other coach in the market? If you are a wealth coach, how are you different than any other person in the market? If you are a relationship coach, how are you different than any other person in the market? पेप्सी भी वही है, कोका कोला भी वही है, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी सेम है. सब या तो काले कलर की होती है, व्हाइट कलर की होते हैं, जो भी ये ऑरेंज ये येलो कलर कर दिया, वट एवर इट इज. But why do you drink Pepsi? Why do you drink Coca-Cola? Why do you drink Thumbs Up? Okay, all are black. Pepsi is also black, Coca-Cola is also black, Thumbs Up is also black. But why do you drink Pepsi only, or Coca-Cola only, or Thumbs Up only? It's UVP. There is something different in Thumbs Up according to your feel. जो आप feel करते हो. Like for me, if I talk about all these brands, Pepsi, Coca-Cola, and Thumbs Up I would see more stronger. This is my perception. I don't know about you, but Thumbs Up as a brand is more stronger to me. Okay. Thumbs Up as a brand is more stronger to me. Maybe less sugary. Whereas when it comes to Pepsi, it is more sweeter. And when it comes to Coca-Cola, it is in between. That's my personal perception. I don't know about you. You might be having a different story. You might be having a different thing. You might be having, so the perception that you create, a brand होती नहीं है, बनाई जाती है. Was this a Balwan moment? ब्रांड होती नहीं है, ब्रांड बनाई जाती है. When your mentor says, hey, I am doing this, I am doing that, what do he means as a brand? When he's saying, मैं यहाँ जा रहा हूँ, I'm into this seminar, I'm into this workshop, I'm with Tony Robbins, I'm X, with Y, I'm with Z. What does that mean? Type in the chat box, what does that mean? It means silently he's saying, मेरे साथ आ जाओ, वरना पीछे रह जाओगे, कुछ छूट जाएगा. Did he say it to you? No. But did you feel it? Yes or no? ऐसा उन्होंने बोला? No. क्या आपने ऐसा फील किया? Yes. फिर आप क्या कहते हो? Yes, yes, I want to book a ticket. When do you want to book a ticket? Okay, next year we'll book a ticket. Blah 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 blah, whatever it is. So the brand is being created in the eyes and the minds of the people. Brand does not exist. अपने आप से कोई प्रकट नहीं होती है. ब्रांड भगवान नहीं है. Getting my point? Now, next point. You already, if you know your UVP, if you don't know your UVP, go to the previous diamond coaching sessions. In one of the sessions where I've spoken about UVP, I have spoken about UVP very much in detail, too much in detail. Okay, about this one concept called UVP. So you can check about this UVP. Now the second thing is called niche. और इसके ऊपर भी हम लोगों ने in the last session or last to last session we have spoken too much in detail.
When I'm talking about your main niche, for example, email marketing. Your sub niche is email marketing. Your micro niche is email marketing for seven-figure business entrepreneurs. So मेन निश, सब निश, माइक्रो निश, बहुत बातें करी हैं. अगर आपको क्लियर नहीं है, आई वॉन्ट यू टू गो बैक टू द प्रीवियस सेशंस where I have spoken about the niche clarity. Go and revise those previous niche clarity sessions. You will find greater, uh, insights into the niche clarity. And by the way, this is in this mission also. This time, when we are on the mission number 3, I've already spoken about in some one mission 2, mission 1 and mission 2, and similar also about niche. So the now third thing, and these are, by the way, these are the steps. Step number 1 is identify your UVP. I hope you have identified. Niche, I hope you have identified. Okay. Now today we'll be talking about the third part of the story. I'll be talking about this in detail today, your story. So step number 1, do your UVP. Step number 2, define your niche. हेल्थ में काम करना है, वेल्थ में काम करना है, रिलेशनशिप में काम करना है. हेल्थ में काम करना है तो कहां करना है? वेट लॉस. वेट लॉस में काम करना है तो किसके लिए करना है? फीमेल. फीमेल में काम करना है तो किसके लिए करना है? वर्किंग प्रोफेशनल्स. फीमेल में काम करना है, किसके लिए करना है? लैक्टेटिंग विमेन. ओके. फीमेल के लिए काम करना है तो किसके लिए काम करना है? अनमेरिड, जस्ट गेटिंग मैरिड. दीज आर ऑल सब निशेस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? निश इज वन, बट देयर आर सो मेनी सब निशेस इनटू द कैटेगरी. Even if you are going for the weight loss for females, inside that category also there are 5-10 more categories. Category number 1, lactating mothers. Number 2, unmarried women. Number 3, just about to get married, those who are just engaged. Number 4, just got married. Number 5, mid-age women. Number 6, old age women, whatever it is. So there are so many categories. और कैटेगरी किंग आपको बनना है. कैटेगरी पहले चूज करनी है, पहले आपको कैटेगरी चूज करनी है, फिर उसका कैटेगरी लीडर बनना है. कैटेगरी, एनीबडी इज कमिंग फ्रॉम एफएमसीजी कंपनी हियर? एनीवन फ्रॉम एफएमसीजी? If you understand the FMCG, then you will understand category king. That's called category leader. Like for example, in the noodles session, in the noodles domain or the noodles niche or the noodles niche, okay, some noodle section FMCG. Okay, one category is called noodles. Who is the category leader? Nestle. And the product, category leader product is Maggie. आज से कुछ साल पहले 5,000 करोड़ की ब्रांड थी मैगी अलोन. आई डोंट नो, अभी मुझे नहीं पता अभी आज का क्या डेट है. मे बी 2 years or 3 years ago 5,000 crore alone was Maggie. Alone, one product. And slowly UP is also taking charge now. So step number 2 is niche, then it is your story, then it is your identity. So you are being known as who? What is your identity? Next step is your online presence. So once you know your UVP, once you know your niche, once you know your story, you have your unique identity. You need to create your online presence. Why online presence? Because देखो, you have seen the WWR. How many of you are in a position to conduct a WWR? Type I. How many of you are in a position to conduct an event like WWR? Type I. If you can conduct single-handedly, type I. If you cannot conduct an event like WWR, type N. Most of the answers will be, 99% the answers will be N. Why? You are not in a position to create a personal brand while going the physical workshop model. So what you need to do is, what is the easiest thing for you is online presence. तो आप अपना WWR अभी कहां करोगे? एंड यू टॉक अबाउट योर मेंटर आल्सो. व्हेन योर मेंटर स्टार्टेड इन 2017, पहला WWR कब हुआ? टाइप इन द चैट बॉक्स. इट्स अ जीके क्वेश्चन एंड यू विल बी गेटिंग वन ट्रॉफी. आई डोंट नो विच ट्रॉफी. 2023 में पहला WWR हुआ है. ओके. और काम की शुरुआत कब हुई? वेल्थ एक्सेलेरेटर हब की नींव कब रखी गई? टाइप इन द चैट बॉक्स. When was the Wealth Accelerator Hub founded? Yes.
इट्स व्हाट 2020 अगेन। ओके, तो पहला WWR करने में कितने साल लग गए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेल्थ क्लब, आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ वॉरियर रिट्रीट, आई एम टॉकिंग अबाउट रिट्रीट। सो पहला WWR करने में कितने वक्त लग गया? इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 3 years। वाई? Before that, in those 3 years, your mentor was building the brand, community, and whole persona। और पहले कहां से शुरुआत करी थी? Type in the chat box from where he started. I've already shown you the slide from where he started. Online, online, not exactly YouTube। YouTube पे is not there much, but he started with online। एक काम किया था बढ़िया, एड चलाए, ऑनलाइन रहे, वेबिनार वर्कशॉप करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, एंड देन ही हैज द होल रूम्स फिल्ड। और ये काम रिपीट किया बार 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 बार। सो द इजिएस्ट थिंग इवन टुडे फॉर यू टू क्रिएट योर कोचिंग एंड ट्रेनिंग जर्नी एंड योर क्रिएट योर कोचिंग एंड ट्रेनिंग ब्रांड इज योर ऑनलाइन presence, and which I have already spoken about. If the people have attended social media mastery sessions, अगर आपने मेरे social media mastery session attend करे हैं, yesterday also we took a social media mastery session, I am talking about social media branding only, and particularly these days we have worked on X। So X का header, headline, and then bio, about section, and so many things। So it was that। So online presence is very 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 important। Then networking with more people। if you look at your mentor, where he goes, कहाँ कहाँ जाते हैं आपके mentor, wherever he goes, कहाँ कहाँ जाते हैं? yes, कहाँ कहाँ जाते हैं आपके mentor? which all places he goes? latest किसी के साथ नाम बताओ, recently where he was? okay, maybe Ram Verma। okay, okay, why? जो दिखता है वो बिकता है, उनके कम्युनिटी में दिखेंगे तो बिकेंगे, वो हमारी कम्युनिटी में दिखेंगे तो बिकेंगे। सो इट इज विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। सो आई विल शो यू इन माय कम्युनिटी एंड यू विल शो yourself। I'll show you in my community and I'll show myself in your community। that's a kind of networking। और जहां समझ में आए, create arrangements। okay, and that's a big money also from there। networking खाली ऐसे ही नहीं होती है, there's a big money also in that case। now the next thing is expertise। talk about your expertise। so these are the 7 steps। I want you to take a screenshot of this, and यहीं पे आपका पूरा का पूरा as a coach, social media branding as a coach is very important, or you can say personal branding of yours is very important। the first step is UVP, the second step is your niche, the third step is your story, the fourth is your identity, the fifth is your online presence, sixth is your networking, and seventh is your expertise। and today we'll cover, because other उनको तो हम लोग कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं, we have not covered this, so I'll be covering this, your backstory। whichever person you see in the digital age, किसी का भी आपने डिजिटल एज में कुछ भी देखा होगा, whosoever person you have seen in the digital age and he's a coach, जब वेबिनार शुरू होता है, ओके, UPV is unique value proposition, UVP unique value proposition। just check the past sessions also। so whenever somebody starts a webinar or workshop, what he starts with a backstory। मैं ऐसा था, कोई लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि मैंने अपनी वाइफ के कंगन गिरवी रख दिए थे, शी वॉज प्रेग्नेंट, एंड फिर मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, देन आई डिसाइडेड, देन आई मूव्ड अहेड, एंड टुडे वेयर आई एम। तो ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते हैं आपको, यू हैव सीन एंड हर्ड दो स्टोरीज। सो पीपल हैव दो स्टोरीज। व्हाई देयर आर दो स्टोरीज? because it is very important
टू क्रिएट अ ब्रांड स्टोरी। हर ब्रांड की एक स्टोरी होती है। हर रिश्ता कुछ कहता है। देयर इज अ टैगलाइन, हर रिश्ता कुछ कहता है। सो एवरी ब्रांड हैज अ ब्रांड स्टोरी। हर ब्रांड की ब्रांड स्टोरी होती है, और अगर नहीं होती है तो बनाते हैं। अगर आपकी ब्रांड की कोई स्टोरी नहीं है तो आपको भी बनानी है। इसी तरीके से ब्रांड्स भी अपनी स्टोरीज बनाती हैं। सो नाउ आई वांट टू टेल यू व्हाट आर दी स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्रांड स्टोरी। नाउ take it very seriously and understand this. So first step in creating a brand story is your obstacle. So whenever you are creating a brand story, it will always start with your obstacle. So write it down. आपको सबसे पहले जब भी आप ब्रांड स्टोरी सुनाएंगे, आपकी ब्रांड स्टोरी की शुरुआत होगी विद सम ऑब्स्टेकल। ओके, द सेकंड थिंग योर ब्रांड स्टोरी विल हैव योर इंटरनल स्ट्रगल। What was the internal struggle when the obstacle hit? जब आपका सिर शीशे से टकराया तो इंटरनल इशू क्या था? The third thing is your external struggle. So basically, obstacle, and in every movie this is the case. आप हर मूवी में भी देखोगे, हीरो के सामने एक ऑब्स्टेकल आता है। इट इज बेसिकली द हीरोज जर्नी। एक ऑब्स्टेकल आता है, वो फिर उसके सामने एक सिचुएशन होती है, करो या मरो, और वो पीछे नहीं जा सकता है। ओके, हीरो को दिखाया जाता है, हीरो इज अ वेरी नॉर्मल पर्सन। देन देयर इज अ स्टोरी। ऑब्स्टेकल आता है उसके सामने। ऑब्स्टेकल क्या है कि जो हीरोइन है, शी इज अ बिग, शी इज फ्रॉम अ रिच फैमिली, दैट्स एन ऑब्स्टेकल। देन देयर इज अ इंटरनल स्ट्रगल इनसाइड द हीरो। मैं बहुत गरीब हूं, कैसे कर पाऊंगा, और मुझे तो इसको पाना है। शी लव्स मी, आई हैव टू गेट हर। देन देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल। एक्सटर्नल स्ट्रगल क्या होता है? हीरो टेल्स हिज व्यूज टू द एक्सटर्नल पीपल, और एक्सटर्नल लोग उसको बोलते हैं पागल है क्या, वो शक्ल देखी आईने में, तू कहां बैठा है एक चौल में, एंड शी इज, वो एक दिन भी नहीं रह पाएगी तेरे साथ, भाग जाएगी। शी विल नॉट बी देयर विद यू। सपने छोड़ दे। गरीब कभी गरीब के सपने नहीं होते, सपने हमेशा अमीर के होते हैं। अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। तेरी कुछ पैसों की नौकरी क्या लग गई, 20-25 हजार रुपए कमाने लगा, सपने देखने लगा महलों के, जमीन पे आ जा। यू हियर दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, दिस इज एक्सटर्नल स्ट्रगल फॉर योर हीरो। देन देर इज अ चेंज इवेंट। देन देर इज अ चेंज इवेंट। एक ऐसा इवेंट आता है जो सारी स्टोरी को चेंज कर देता है। मे बी, आई डोंट नो, द हीरो फाइंड्स अ जॉब इनसाइड द कंपनी। हीरो को उस लड़के, जो हीरोइन है, उसकी कंपनी में जॉब मिल जाती है, आई डोंट नो। या समवेयर द हीरोइन सेज, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, आई हैव टू मूव, मुझे तुम्हारे को छोड़ के नहीं जा सकती, या तो तुम मुझे लेके चले जाओ या तो भगा के ले जाओ। आई आई हैव नो अदर वे, वी नीड टू इलोप, हमें भागना पड़ेगा। देयर इज अ चेंज इवेंट, एंड हीरो सोचता है क्या करूं, चला जाऊं। व्हाट इज अ स्पार्क? ही गेट्स अ स्पार्क। उसको एक दिखाई देता है, देयर इज अ स्पार्क, शी वॉन्ट्स टू बी विद मी, ये मुझसे सच्चा प्यार करती है। गरीब हूं, लेकिन पैसों की वजह से, पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, ये सच में मुझसे मेरे को प्यार करने आ रही है। उसको दिखाई देती है अपनी जिंदगी, उसको दिखाई देते हैं अपने बच्चे, उसको दिखाई देता है अपना फ्यूचर, उसको दिखाई देता है अगर मैं इनके इसके साथ रहूंगा, पहले तो मैं ऐसा सपना ही था, बट नाउ इफ आई स्टे विद हर, जिंदगी कितनी अलग होगी। हम तो एक जंगल में भी रह लेंगे कुटिया बना के। देयर इज अ स्पार्क, एक फुलझड़ी जलती है, देयर इज अ स्पार्क। देन देयर इज अ गाइड। हीरो एंड हीरोइन, हीरो एंड हीरोइन टेल समबडी द स्टोरी, एंड दैट समबडी गाइड्स कि बेटा, जिंदगी में कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, मैंने भी अपनी जिंदगी में कड़े फैसले लिए थे, अब तुम दोनों ऐसा करो, कुछ कड़ा फैसला लो। या तो तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, ये लड़का तो कुछ कर नहीं सकता है, लड़की तुम कर सकती हो। इधर टेल योर फादर, और अगर नहीं कर सकती हो, उड़ जाओ।
गो, गो अवे, जा जी ले अपनी जिंदगी। देयर इज अ गाइड। वो जो जी ले अपनी जिंदगी वाला था वो था गाइड। रिजल्ट, हीरो एंड हीरोइन आर मैरिड, ओके, एंड दे हैव दो नन्हे मुन्ने नाउ। एंड ऑफ द स्टोरी, थैंक यू, पिक्चर इज ओवर। ओके, सो दैट्स द पिक्चर। अब ये पिक्चर अपने लिए बनाते हैं। ये आपको पिक्चर मैंने ऐसे इसलिए दिखाई बिकॉज दिस वे यू विल रियली अंडरस्टैंड द मूवी। और मूवी को बनाया इस तरीके से जाता है। How many of you were actually visualizing movie in front of you when I shared this story? Okay, मैं भी देख रहा था by the way. Even though I was the imaginator or the creator of the story, मुझे भी दिखाई दे रहा था कि वो कोई एक बुजुर्ग सा व्यक्ति, कोई जैसे कहते हैं ना संत टाइप का या कुछ ऐसा, वो बैठा होता है, बीड़ी पी रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है, एंड देन कुछ ऐसा कोई मिलता है कहीं पे, मैंने से बेटा, मैंने भी अपनी जिंदगी में गलती करी थी, मैं अपनी वाली को लेकर नहीं भागा था। सो देन दैट्स द गाइड, दैट्स द स्पार्क। ओके, नाउ now let me share with you the story of mine, and you have to create a story. अगर आपने ये कर लिया ना, believe me, you will say me thank you, thank you, thank you 1 lakh times. Because what I'm going to teach you today is again $1,000 product. और जब मैं बोलता हूं, मैं मजाक नहीं करता हूं, चिपकाता जरूर हूं आपको कुछ ना कुछ, चिपकाऊंगा तो मैं जरूर। आज आपको स्टोरी चिपका रहा हूं क्योंकि मेरा काम है चिपकाना। अब आपको स्टोरी चिपका दी, चिपक गई, अब आप कभी भूल नहीं पाओगे इसको। हाउ मेनी यू विल फॉरगेट, हाउ मेनी ऑफ यू विल फॉरगेट स्टोरी राइटिंग? दिस इज अ स्टोरी। जब अप्लाई करना शुरू कर दो स्टोरी राइटिंग के लिए, सोशल मीडिया पे बनाना शुरू कर दो, अगर स्टोरी नहीं है ना, आई टेल यू आज के बाद आपके पास स्टोरी की कमी नहीं होगी। आई टेल यू माई स्टोरी। कैसे सुनाऊं? फ्लो में सुनाऊं या एक एक पॉइंट के साथ सुनाऊं? टाइप इन द चैट बॉक्स, यू वांट टू हियर माय स्टोरी विद ईच पॉइंट, पॉइंट वाइज, कि पहले ये था, ओके, और इन द फ्लो, पॉइंट वाइज, ईच पॉइंट, गॉट इट, गॉट इट। ओके, आई हैव 3 stories, but I'll tell you my story. Problem. It was the year 2014. My 3 months salary was due while working in a management institute. 3 महीने की तनख्वाह ड्यू थी। मेरा बेटा हो चुका था। I was having a son and I was always thinking what will happen. Internal struggle, because my salary was not coming. Inside I felt like I am begging for my own money. मैं शायद अपने पैसे के लिए भीख मांग रहा हूं। I was helpless and I felt like I am trapped and there is no way out. कोई तरीका ही नहीं है। Even I started thinking about selling shoes, ABCD, XYZ, कि कुछ तो करना है। Salary was like me, and whenever I went and asked the organization for my money, they said आएगी आएगी आएगी, and आएगी was like a word that is begging to me. So inside I felt like begging, and then what is it? And I felt फंस गया हूं, no way out. External struggle. I was not able to pay the people outside. After doing my PGDBM, that was in 2003 and 2005, I was having very good degree. But I was thinking, even after this very good degree, if this is my fate, I am not able to earn, what is it? People from my family said that my very close blood relative, she said, he'll do nothing. He'll teach only. ये कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, खाली पढ़ाएगा। Change event. I took a bus. I went to Ludhiana, where one of my friend's brother was there. He was running a coaching and training institute, the Spark. The moment I entered the coaching and training institute, which was running well, I saw that there are students who are coming for inquiries. And I was there for 2 to 3 hours, and there were almost like every 10 or 15 minutes, 2 or 3 people, 2 and 3 people. And that day, the moment after 1.5 hours, like it was 1:30, the counselor said, "Sir, ये लो पैसा कितना है?" "Sir, 50,000."
was amazed. 50,000 रुपया 3-4 घंटे के सुबह में, he's done. I was astonished to see such an ease of getting admissions and revenue इतनी आसानी से, and I'm begging for my money. Guide, my friend, his name is Shambhu. He told me that ये चीज यहाँ पे काम कर रही है ना लुधियाना में, it will work in your place also called Kashipur. Just take the franchisee, don't think much, take it. And I was a sixth franchisee of the brand IBT that we started in Kashipur. The result, in 3 to 4 years span of time, we were able to generate approximately 1,000 admissions. I'm not talking about inquiries, I'm talking about admissions, with the average billing of 12,000 rupees per student. And since then, I am fascinated by self-employment, entrepreneurship, and there is no go back. That's my story. So I want you to create a story. I want you to create a story, and you can do it right now. By the way, this story is a real story. It's not a, जैसे पहले आपको लड़के उसकी हीरो और हीरोइन की स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी. इट वाज नॉट आई एम द हीरो इन दिस मूवी. यहाँ पे हीरोइन नहीं थी, वो घर पे थी. शी वॉज मैनेजिंग हर सन. ओके, वो हीरोइन घर बैठी थी, शादी पहले हो चुकी थी, इसमें कोई भागना भागने की प्रक्रिया नहीं हुई. आई वॉज माई हेयर द ऑब्स्टेकल वॉज मनी. ओके, the obstacle was money. Now look at the elements in this story. All of you have this story in your mind now. जो मैंने आपको story सुनाई, my personal story, and that's real story. So the first thing, if you remember, what was the problem? Just type in the chat box. What was the problem I faced in whatever words you have? What was the problem I faced? No money. Got it. What was the internal struggle? What was the internal struggle? Okay, son, yeah, that is part of. Okay, okay, got it. तो इंटरनल स्ट्रगल वो होती है जो आपके अंदर चल रही होती है, बाहर वाले नहीं देख सकते उसको. अंदर ही अंदर घुट रहे होते हो आप, डो 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 कुछ कुछ घुट रहे होते हो. ओके, सो पीपल कैन नॉट सी इट. दैट्स योर इंटरनल स्ट्रगल. थर्ड पार्ट, व्हाट वाज माय एक्सटर्नल स्ट्रगल? एक्सटर्नल स्ट्रगल होती है कि जो आप लोगों की बातें सुन रहे हो, परेशान हो. एक तो आपका काम हो नहीं रहा है, देन लोग है ना वो अपना प्रतिक्रिया करते हैं, सामने आके कुछ ना कुछ बताते हैं आपको. हाँ, ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसे ही है. हाँ, इज वट एवर इट इज. जो आपकी स्टोरी होगी उसमें आपके सामने स्ट्रगल आई होगी. सो देर आर ऑलवेज टू काइंड ऑफ स्ट्रगल. देर इज एन इंटरनल स्ट्रगल जो लोगों को दिखती नहीं है. देर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल जो आप सुन रहे होते हो. लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इफ आई वुड हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट आई एम हैविंग दिस इशू, व्हाट माई फ्रेंड्स वुड हैव टोल्ड, तेरे को किसने बोला था टीचिंग में जाने के लिए? व्हाई डिड यू गो टू टीचिंग? If I would have shared this thing with them. Okay. So if somebody would have said that to me, that is an external struggle. Yeah, social criticisms, you can say what people are saying to you. What was the change event? What was the change event? Coaching institute. Change event was taking the this was like I took a third AC train. I took a 3-tier AC train to Ludhiana from Muradabad. I still remember. Okay. And what was the spark? What was the spark? Ludhiana was not the spark. पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है? So spark was that 50,000 rupees. And the counselor saying, sir, अभी इतने एडमिशन हो गए हैं, बाकी पूरे क्यों नहीं आए, अभी थोड़े और आने वाले हैं सर. Okay. What was the result? Okay. After this spark, who was the guide? What was the guide? Friend, Shambhu. Perfect. And what is the result? 1,000 students. Franchisee, work, self-employment, prestige, value, self-satisfaction, XYZ. बहुत कुछ है.
वो चलता जा रहा है आज भी शायद। एंड ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर मैंने वो फ्रेंचाइजी 2014 से 20 तक नहीं चलाई होती तो आज मैं कभी भी सेल्फ मतलब, बिकॉज दैट बग हैज एक्चुअली बिटन मी। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कीड़ा ना काट चुका है, तो वो कोई बाहर निकल नहीं पाता है। दैट इज द रीजन आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अदरवाइज आई वुड हैव बीन डूइंग समथिंग एल्स, जॉब कर रहे होते कहीं ना कहीं जॉब में, और फिर आराम से आके अभी सो गए होते। एक टीचर कैसे जीता है, एक प्रोफेसर कैसे जीता है अपनी लाइफ? 5 बजे कॉलेज से, 6 बजे कॉलेज से आ जाते हैं, उसके बाद या तो रिसर्च पेपर होगा या फिर कल के लेक्चर की थोड़ी बहुत तैयारी होगी, एंड दैट्स हाउ ही वुड स्लीप। सैटरडे होगा, संडे होगा, सैटरडे नहीं होगा तो संडे तो होगा, एंड दैट्स हाउ ही वुड स्लीप। जो चलेगा चलता रहेगा। सो दैट्स हाउ। सो नाउ आई वांट ईच वन ऑफ यू टू create your story. Okay, I want each one of you to create your story, and you will share your stories later. So I'll share each of the point. So the first point is obstacle. Okay. Now write down your first point. What was the obstacle in your story? You can create any of the story. That should be a real story. Because अगर आप real story नहीं बनाओगे, if you are creating a imaginary story, लोग पिक कर लेंगे कि फर्जी स्टोरी है। ओके, और फर्जी स्टोरी और अ काइंड ऑफ फेक स्टोरी विल नॉट वर्क। कनेक्ट करेगी आपको हमेशा ऑडियंस से आपकी रियल स्टोरी। ये स्टोरी अगर आज मैं लिंक्डइन पे लिख दूंगा ना, आई कैन टेल यू देयर वुड बी 3 to 4 कमेंट्स और मे बी 10 और मे बी मोर। और मुझे लिखना है, आई हैव 3 स्टोरीज ऑलरेडी क्रिएटेड। बाय द वे आई विल राइट द स्टोरी, माय पर्सनल बैक स्टोरी। ओके, आई हैव 2 more स्टोरीज लाइक दिस। और स्टोरी, एक चीज और आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज आपने और ध्यान रखना है। कैन यू सी ये स्टोरी किस टॉपिक से रिलेटेड थी? कैन यू सी विच टॉपिक दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू? नो, नो। Mm-hmm. Yeah, broader manish is wealth. So this story was, yeah, that's the point. One thing is self-employment, entrepreneurship, coaching and wealth. ये सारे टॉपिक्स मेरे हैं ना, इसलिए ये स्टोरी आपको बताई गई। स्टोरी तो और भी होंगी, देयर वुड बी मोर स्टोरीज, बट व्हाई आई एम शेयरिंग यू दिस स्टोरी? बिकॉज आई एम अ कोच, I am into coaching and training. I'm into coaching and training. I did start a physical coaching and training institute. So I started with this in 2014. So when I have to tell anybody that okay boss, coaching and training में पैसा है, okay, when I say boss, और हमेशा आपकी बैक स्टोरी में आप बेकार होने चाहिए। हीरो इन एनी मूवी शक्तिमान कब बनता है? बाद में बनता है। डे वन से शक्तिमान शक्तिमान होता है क्या? शक्तिमान कैसा होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ ओरिजिनल नेम ऑफ शक्तिमान? व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ शक्तिमान? SG। ओके, सो व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ शक्तिमान? मुकेश खन्ना। सो जब आप शक्तिमान देखते थे तो उसमें शक्तिमान ओरिजिनली क्या होते थे? मुकेश खन्ना। देन यू देन शक्तिमान, देन लेटर ही बिकेम शक्तिमान। सो इन योर स्टोरी, इन द बैकग्राउंड यू हैव टू बी ऑलवेज बेचारा, यू हैव टू बी हेल्पलेस। अगर आप sales expert, let's say your topic is you are a sales expert now, and your backstory should be about sales। और वो भी कैसा कि जब आपको धक्के मार के ऑफिस से निकाल दिया गया हो, शुड बी रियल, फेक नहीं बनानी है। आपको धक्का मार दिया गया हो कि सेल्स तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें तो सेल्स छोड़ देनी चाहिए। इफ स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दिस एंड टुडे यू आर अ सेल्स एक्सपर्ट, इट विल बी कनेक्टिंग। इफ यू आर अ वेल्थ कोच और आपकी स्टोरी ऐसी हो कि आज से 4-5 साल पहले आपके जेब में बिल्कुल पैसा नहीं था, ओके, इफ यू आर इनटू द वेल्थ स्पेस, इट विल बी कनेक्टिंग। और आज आप पैसा बना रहे हो, आई डोंट नो विच मेथड, चाहे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, XYZ, whatever it is, there could be so many things। Got it? So now I want you to write down all these points and create a story। तो स्टोरी चिपकाई गई, सही चिपकाई गई आज आपको स्टोरी? तो चिपकाओ अभियान ठीक चला है? इस वाज दिस ओके? पेस्टिंग ऑफ दिस concept?
So I pasted a concept of story with you now. So the first thing is obstacle. Okay. Second thing is internal struggle. Write it down. Third thing is your external struggle. Fourth thing is the change event. The fifth thing is spark. Sixth is guide. Seventh, result. Everybody has written these all these 7 points. Type in the chat box yes. If you have written, चिपक गया, very good. चिपक गया तो बहुत अच्छी बात है. I'll not be taking any of the questions. Just speak to me in the chat box. I don't want to break the flow. Type in the chat box all the 7 points. Type 7 or okay. Everybody has got it. Now I'll play the music, and it is 9:54 for 5 minutes. I'll be playing the music, and I want you, each one of you, to create a back story. नहीं क्रिएट करोगे ना तो फिर चिपकाना ही कहलाएगा कि आज क्या चिपकाया मैंने आपको, बैक स्टोरी का झुंझुना, और वो खेल के आप खुश हो गए और किया जरा कुछ नहीं. गॉट इट? करोगे? डू इट. आई विल सी. सो आई प्ले द बैक म्यूजिक. अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि कुछ ऐसे क्लास में लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे क्या बोल रहे थे जरा बताना, क्या बोला जरा बताना मुझे. तो बोला कि द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम इन योर बैक स्टोरी. राइट इट डाउन. सेकेंड पॉइंट इज internal struggle. Write it down. Third point is external struggle. Write it down. Fourth point is change event. Write it down. Next is spark. Fifth point, write it down. Sixth is guide. Write it down. Seventh is result. Write it down. $1000 का आज का प्रोग्राम है ये. अगर आज आपने इसको ढंग से कर लिया ना तो किसी भी स्टेज पे जाओगे, ये स्टोरी चिपका दोगे, तालियां ही तालियां बजेंगी और ब्रांडिंग अलग हो जाएगी. ओके. और कहां सुनानी है स्टोरी, यू हैव टू डिसाइड. हर जगह आप हर स्टोरी नहीं. आज तक मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई कभी? एनीवन? टाइप इन द चैट बॉक्स यस और क्लिक नो. डिड आई एवर टेल यू दिस स्टोरी? आज 1 साल हो गया आप लोगों को यहाँ पे मेरे साथ. डिड आई एवर टेल दिस स्टोरी टू यू? नो. हर चीज का एक वक्त होता है. ओके. ऐसी और भी स्टोरीज है मेरे पास. नाउ एंड बाय द वे अगेन सेइंग ओरिजिनल ऑथेंटिक स्टोरीज. सो वर्थ म्यूजिक. So your time starts now. It is 9:56 and we'll meet at 10:04. Okay, 10:04 we'll meet.
welcome everyone. Welcome back. So now just want to ask, raise your hand if you have your story ready. We'll hear the stories now. मजा आएगा बहुत सारा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. We'll hear the stories. Okay. So first hand raisers. I'll start with Arun. Yeah, Okay, share your story, backstory. okay, thank you, sir, for giving me opportunity to share my backstory and brand story, just like. Okay, in obstacles that I'm talking about my You don't traditional have to. You don't have to tell each point. You just simply share your story, complete story. simply in traditional education, 4 years BTech program, MTech program, 2 year and PhD program. I spent 35 lakhs, completely 35 lakhs. My father is a farmer, and because of that, a lot of financial issues are there. And all these educations, I take the education loan. So I go to the lot of debt are there, and finally, I got a job of only 60,000 per month. And now there is some internal struggles are there and fighting among the family members. Some of the money of taken by my brother, some of my family members are there. They are fighting because of the lack of money already. And there are some external struggle is that simply there is Just, no just money. share, just share your story in the flow. Yeah. Everyone share your story in the flow. No money in pocket. Many people say to me, no money in your pocket, even after 6 years of your job. Then whatever there is I decided to go from physical to digital there because in the job, and there is nothing in my hand, in my pocket, and I'm moving here and there, and even I don't go for any visiting places, and that's why I decided to move from physical to digital. And there is a sparking point that 90 days spoken English mastery program, and I go for the advertisement and just dial and take to one or two client each month of worth are 7,000 per month, 7,000 per client. And in that way, what happened that little bit I feel relaxed in terms of the finance. Now I found one guide, Dr. Sandeep Gupta sir, and with the help of that guide, the result is that the fast track journey and become the diamond. And finally, I promise to earn 50 lakhs in the year 2025. That is the simple result. Okay, fine. Thank you. Now we'll move on to the next story. So how was the story, everyone? How was the story, everyone? Okay, flow missing. Okay, got it. So work it out. Okay, we'll move on to the next person. Work it out. Prepare your story better. So the people are saying this flow is missing. Okay, we'll move on to the next person. No problem. Create your story, better story. Now you know the elements. अभी क्या करना है? See, jigsaw puzzle जो था, उस jigsaw puzzle के pieces आपको मिल गए. आपको सिर्फ pieces add कर रहे हैं. Okay, thank you. Manish. Sir, I got my first job in 2007 as a MIS executive. That time, that word MIS means office executive. The person who has low skill, that job offered by to them only. Then I in the वो जो आया था रिसेशन के पीरियड में सबसे पहले मुझे चूज किया गया था कि फॉर द कॉस्ट कटिंग देन आई हैव टू मच टीयर्स इन माय आईज एंड मैंने सभी से पूछा कि मेरा ही नाम क्यों आया तो सभी ने बोला कि बिकॉज यू है तो इसका आंसर किसी ने मुझे नहीं दिया मुझे ये खुद से पूछना था और खुद ने ही इसका जवाब अपने अंदर ढूंढना शुरू किया उसके बाद थोड़ा पीरियड रहा जिसमें मैं बेरोजगार रहा अनएम्प्लॉयड रहा और फिर एक नई जॉब मैंने किसी तरह सर्च कर ली लेकिन देट वाज अगेन द सेम जॉब एमआईएस एग्जीक्यूटिव एंड आफ्टर इस सब में मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं बहुत सारे चीज स्किल सीखूंगा उस जॉब में रहते हुए बहुत सारे काम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करूंगा तो मैं आई वॉज द हार्ड वर्कर पर्सन इन दैट जॉब 2 साल तक उसमें रहने के बाद भी अगेन द कॉस्ट कटिंग पीरियड
आया और उसमें सबसे पहला नाम मेरा था। तो मैं मेरा जो उस समय फ्रेंड था, कलीग थे, उनके पास में गया कि अगेन सेम चीज मेरे साथ ही क्यों हो रही है, जबकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना हार्ड वर्कर हूँ और आप जो मुझे लगता था कि आप मेरे मुकाबले 1/3 काम भी नहीं कर रहे हैं और आप हायर सैलरी पे हैं। तो उन्होंने बताया कि आपके पास एक अच्छा टफ स्किल नहीं है, तो आप और हाई डिमांड स्किल नहीं है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। तो मैंने आई वॉज द स्लो लर्नर। तो मैंने कुछ उनसे गाइडेंस लिया कि आप बताएं कि कौन सा स्किल है जो कि मार्केट में डिमांड में है। तो उन्होंने उस समय मुझे बताया कि टेली और एक्सेल पे कमांड बनाओ आप। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग दैट। मुझे पता था कि मैं एक बार में नहीं सीख पाऊंगा, तो आई आई ज्वाइन द फर्स्ट बैच। एंड एक किसी तरह मैंने 15-20 दिन में उस कोर्स को कर लिया। और आई आई स्टार्टेड, मैंने इस तरह के इंटरव्यू फेस करना शुरू किया जो कि अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के थे या अकाउंट्स मैनेजर के थे। एंड आई गॉट माई जॉब एज ए अकाउंट्स मैनेजर। That is my story. And I am working from last 15 years as a accounts manager. Thank you. सर, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। Thank you, everyone. Feedback. Okay, so okay, got it. So I want everyone now point के ऊपर रहिए. You talk about the point. 7 points. Point number one. Point number two. You just name the point. For example, the point is obstacle. Da 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 da. Internal struggle. Da 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 da. External struggle. Da 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 da. Whatever it is. So we'll stay on the point. So मुझे भी easy रहेगा आप लोगों को connect करने में. Thank you, Manish. Prepare your story better. It was good. It was fine. But I think that requires refinement. और इतनी जल्दी नहीं बनती है, टाइम लगता है. 15, अगर आपने मेरे को स्टोरी सुनाते हुए सुना तो मैंने उसको पहले लिखा था और आपको लग रहा होगा कि अरे बड़े अच्छे तरीके से दिखा दिया सबको, एवरीबडी हु फाउंड इट गुड. आई हैव रिटन इट मेटिकुलसली, थॉट अबाउट इट, देन ओनली इट वाज क्रिएटेड. ओके, सो यू हैव टू राइट. ऐसा नहीं हो जाएगा कि इतनी जल्दी. सो यू हैव टू राइट इट. ओके, थैंक यू. सो विजय. It was 2020, it was 2012, where, Obstacle. sorry, Obstacle. yeah, first one is obstacle. It was 2012 when I was sitting in the people of 20 people groups. So where one HOD, means my HOD shouted on me, Vijay, what are you doing? All people are giving training these days. What are you doing? So I was just scared what he was telling. So I just come on front and I told, I am in just joined in this company and I don't know the what tradition we are following. So I started with just that I don't know the value analysis and value engineering, which is a cost reduction technique. Then it was totally insult. So he told one statement which was hurt me, and I found that was an obstacle. Vijay, you can't train any person in the job, and nor you can do any business. Then internal struggle. Then I sat for 1 week, whole week I was thinking, day night I was thinking what you are doing, what I am missing, and I found that the all people are saying about the giving the trainings to the suppliers on the value engineering. Cost reduction requires special skill. Then parallel external struggle started. Other department people told, see, this person has joined the specialized department and he don't know how to give the training to the suppliers. So just chit chat. I heard sometime like, ये इससे नहीं हो पाएगा, ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा इससे. Then change the event. I got to know from the internet that we have in India Invest, that is Indian Value Engineering, and we have Society of American Value Engineering, that is same. So they have specialized course on this. So I searched and I applied for one of started learning from the portal. What is Spark? Uh, when I got to know this
exam where to apply, and I applied the exam. I got a certification of associate value specialist in the value engineering field, which is the highest recognition. After that, CVS is also applied. Then I found during the process guide. I found the guide. The guide, Mr. XYZ. I will not name. Mr. XYZ. I got the guide who told me, Vijay, you are doing great. You passed this exam in a proper way. And can you join me in my webinars free of cost? I will not able to pay anything. So I tried whenever he was doing some weekends seminars, I started joining that, not telling in the company and just started joining it. What I found, every seminar I got new information, new examples. So that is the power of the guide I received. Then the result. Now, current days, I'm actually the specialist in my company for the value analysis and value engineering, and even taking more than thousand, uh, already taken the more than thousand trainings in the company and vicinity. Thank you. Okay, thank you. So feedback, everyone. Just type in the chat box. Okay, so the feedback is good, perfect. So we have Dr. Sandeep here, your mentor. He is there with you and he'll check your stories. Okay, let me check. Dr. Sandeep, available? Let me unmute so that if in case. Yes, Dr. Sandeep, yeah, Okay, he's here. can you go Perfect. for one more story? Then I will come in next 30 seconds, 1 minute. Yeah. I'm just logging from laptop. I just reached my home. Got it. So everyone, next story. Next story is, let me take Dr. Ganga, your story. Good evening, everyone. My obstacle was I was not able to spend time with my children and also keep up with the financial expenses. So my internal struggle was, as a plastic surgeon, I had to pursue my studies for a long period. While pursuing my studies, I completed my family and my children were taken care. My parents were taking care of the children. So it was not the initial years with my children. So that was my internal struggle. I'm not able to spend time with my children. And as I am the only breadwinner of the family, I had to earn out. So in 2017, I got a stable job and I settled as a assistant professor in plastic surgery at Windsor Government Hospital. But I, I had, I had I wanted to practice also because 94 I used to attend the hospital and after 4 I used to go to private hospitals. Because of this, I could not spend time with the children. And also, it is also important. If the government salary, I did not meet the financial needs of the family and my children's education. My experience struggle was my parents were also both and they are also not able to take care of the children and they are also frustrated. They are going at 9 o'clock and they are coming in very late like that. So I started. I must have some passive. I must concentrate on passive, how to earn passive. Then I was searching various YouTube videos, how to, what are the various passive income sources and how to build up the passive income source. Then I came across the 99 rupees workshop of Dr. Sandeep. So the spark was he told about various sources of passive income and how one-time investment of time and effort and then you can earn the money for lifetime. So I chose Sandeep Gupta as my guide and his promise to uplift me financially, probably I am on rich today.
So the result is I joined this school and now I am in the transformation journey personally and financially. Thank you. Okay, everyone, feedback. There was voice that was low. Everybody was saying, but anyway, how was it? Okay, got it. So let's move on to the next person. Thank you. Yes, So next person is Sandeep Gupta, ladies and gentlemen. Good evening, Good sir. Good evening. evening. Good evening, sir. Wow. I just reached 3 minutes back. I thought I'm so excited to share my WWR face because you could not shown your face to us. So I thought that I will be sharing my face. Is it okay? How was an experience? Okay. If is it okay if whatever you have learned right now we can stop till now? Is it okay or you want to proceed with all those things? Comment in the chat.